नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड हिंदू जेनोसाइड वॉच में। आज हम एक इलस्ट्रेशन वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो एस्टैब्लिश करता है कि हिंदूज ऑफ कश्मीर के साथ जेनोसाइड कैसे हुआ। तो उस वीडियो में हमने डिनायल को भी एस्टैब्लिश किया है। ये वीडियो करीबन 2 साल पहले बनाया गया था, तो आज हम आप सभी को ये भेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो, चूंकि ये वीडियो इंग्लिश में है, इसका जो हिंदी वर्जन है वो लिंक हम इसके साथ जोड़ देंगे आज इवनिंग तक। तो पेश है आपके सामने ये वीडियो। रुद्रा जी, प्लीज प्ले द वीडियो। Today we are talking about a religio-ethnic community which has suffered persecution and extermination. Yes, we are talking about the aboriginals of Kashmir, the Kashmiri Pandits. Being the aboriginals of Kashmir have a chronicled, documented history of 5,000 years. Kashmiri Hindus have a harrowing and bone-chilling history of gore and blood, torture and religious persecution, molestation and disquiet. Tragically, they have been harried, despoiled and laid waste, and as victims to vile oppression and abominable persecution, they have been fleeing every now and then from their homeland. Imagine a community which once occupied cent% of population before the advent of Islam has been squeezed to a mere single-digit % of total population, ample to justify genocide. Modus operandi: conversion relief, banishment salive, killing gilive. 7 exoduses in 700 years means every other generation has faced the wrath of banishment. Kashmiri Hindus had to flee as far as Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and many other places in India. Attributed to genocidal persecution in Valley at the hands of barbaric fanatic rulers in Kashmir. Even in the state of Jammu and Kashmir, we find Kashmiri Hindu scattered in Kishtwar, Bhadrawa, Doda, Poonch and Rajouri district. Yes, the sacrifice of Guru Tegh Bahadur and later advent of Sikhs in Valley brought some respite, but it was momentary till the fanatics and theocrats reorganized themselves against Kashmiri Hindus and during the heyday of freedom movement in the Indian subcontinent organized their wrath again through the loot, arson and plunder of 1931. Let us assume for a moment that religio-ethnic cleansing leading to genocide was a thing of past, considering Kashmir was ruled by autocrats and feudal lords. While talking about genocide, it is mandatory to know that United Nations in 1948, while recognizing that at all periods of history, genocide has inflicted great losses on humanity, and being convinced that in order to liberate mankind from such an odious scourge, international cooperation is required. United Nations on 9th December 1948 adopted Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. India, upholding its true humanist values and principles, was one of the founding members and a signatory to this convention. Article 1 of the convention states, the contracting parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law, which they undertake to prevent and to punish. Thus, in accordance with this article, India, being a contracting party, is under contractual obligation to prevent and punish the crime of genocide. Beyond being a contracting party to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,
India is a country which upholds justice, liberty, equality, fraternity, and it forms the basic structure of Constitution of India. A country where rule of law prevails over everything else. And today, we're talking about genocide of Kashmiri Hindus in light of jurisprudence and contemporary customary laws. The exodus of Kashmiri Pandits from Valley was not an isolated activity limited and confined to 1990, but its seeds were sown right from 1947 when the state of Jammu and Kashmir acceded to Indian dominion. Article 2 of the UN Convention on Genocide defines genocide as any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group as such. A. Killing members of the group. B. Causing serious bodily or mental harm to members of the group. C. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. D. Imposing measures intended to prevent births within the group. E. Forcibly transferring children of the group to another group. Understand here, any of these 5 acts and Kashmiri Hindus fulfill the first 3, which amounts to crime of genocide. Here we need to know that beyond the definition of acts of genocide, Article 3 of the Convention establishes the acts which are punishable under this convention, and they are A. Genocide, B. Conspiracy to commit genocide, C. Direct and public incitement to commit genocide, D. Attempt to commit genocide, E. Complicity in genocide. We need to understand that the process of genocide has predictable stages. They are not linear because they usually operate simultaneously, but there is a logical order to them because a later stage cannot occur without a logically previous stage. These stages are: the first is classification, when we classify the world into us versus them. The second is symbolization, when we give names to these classifications like Jew and Aryan, Hutu and Tutsi, Turk and Armenian. Sometimes the symbols are physical like the Nazi yellow star. The third is dehumanization, when perpetrators call their victims rats or cockroaches, cancer or disease, so eliminating them is actually seen as cleansing the society rather than murder. The fourth is organization, when hate groups, armies and militias organize. Fifth is polarization, when persons are targeted who could stop the process and potential perpetrators and their sympathizers are made to believe that they are different and superior from others, despite that are being exploited. The sixth is preparation, when the perpetrators are trained and armed, victims are identified, transported and concentrated. The seventh stage is extermination, what we legally define as genocide, the intentional destruction in whole or in part of a national, ethnic, racial or religious group. Now, let us examine these stages and compare it with the stages that led to exodus of Kashmiri Hindus. Classification. In his autobiography Aatishe-Chinar, Sheikh Abdullah, the so-called tallest leader of Kashmir, has branded Kashmiri Pandits as fifth columnist of India in Kashmir. What does fifth columnist mean? A fifth columnist is someone who secretly supports and helps the enemies of the country or organization they are in. Means Sheikh Abdullah in his autobiography terms KPs as anti-nationals, thereby classifying them separately from Muslim population. Pamphlets and death notices were specifically posted outside the houses of Kashmiri Pandits based on the same ideological principles of fifth columnists as mentioned decades ago by Sheikh Abdullah in his autobiography. Symbolization. Symbols were used to harass Kashmiri Pandit community, racial slurs, Dale Bata, Dale Gadwa, Kafir, Mukhbir, Sangi, Indian agents, were some of the most common racial slurs used to inflict mental harassment upon the minority Hindus of Kashmir, and it went a long way in inflicting the mental trauma. Dehumanization. Kashmiri Pandits were dehumanized, and this was done in line of the same pattern, branding Kashmiri Pandits as fifth columnists. Here is a statement of a noted historian for you.
As per Hussain, Pandits who may return will sit as idlers, and some of them may venture out to spy for the state. And at the same time, they will provoke Kashmiri Muslims by protesting against Pakistan and hurling abuses at it. And thus would be like cancer if they return. Usage of terms like virus, cancer, rats, cockroaches, snake have now become sort of synonymous with Kashmiri Pandits in Kashmir amongst the population there, to the extent that editors too allow such words to get published in their publications. Organization. Before we arrive at 1990, we must understand that a full dress rehearsal to what was to succeed shaped up in 1986 Anantnag carnage. The 1986 aggression on the minority, planned and premeditated, marked the tail end of the total destabilization campaigning strategy. Hundreds of temples, scores of Pandit houses were razed to ground, burnt, desecrated in district Anantnag and other places in valley over frivolous ground. As a matter of reality, all political regimes, be it Muslim Conference, National Conference, Jamaat Islami, Plebiscite Front, Muslim United Front, and under the tight leash of fundamentalist Muslims, not only stoked and fostered communalism but pioneered measures and devices to snuff out the Kashmiri Pandit minority. And 1990 saw the culmination when armed groups, Jammu and Kashmir Liberation Front, Muslim Jambaz Force, Al-Umar, Al-Barq, Hizbul Mujahideen, Al-Jihad, Ikhwanul Muslimin, furthered and realized the plan of getting Valley rid of Pandit. Next is polarization. The first blow of mental harm came in shape of a loot of landed properties by the interim government of Sheikh Abdullah in 1948. Wrath and fury unprecedented in scale was generated against them, as they had been cunningly projected as the only section possessing landed properties. The names of Hindu landlords were very frequently projected as the exploiters and bloodsuckers to solidify the ranks of Muslims on religious grounds for nefarious political objectives. Ahmad Mir and Masmat Ashraf Begum, possessing 4,202 canals of land and 3,915 canals of land respectively, were never projected on the public mind space. This was the first act of polarization through wanton abuse of power, ironically in Free Secular Republic of India. Next is preparation. Jammu and Kashmir Chief Minister Sheikh Mohammad Abdullah visited Calcutta in 1980. The local Kashmiri Pandits met him there. Sheikh told them clearly that numerical strength and education counted, and that he could not accommodate and employ Kashmiri Pandits. As against them, he had to recruit Muslims in services. Quote, Kashmiri Pandits will progress anywhere outside the state, unquote. Sheikh told the group of visiting Kashmiri Pandits and added, they will have Kashmir as a summer resort and can visit it in summer for holidays. It was also published in J&K government brochure, Where Will It End? Page number 1112, 1979. It would be difficult to avoid some major social engineering in days to come to restore balance in favor of Muslim majority in Kashmir to avoid tensions. Now it is self-explanatory that how much polarized the establishment was against Kashmiri Hindus. Extermination. All brands of human rights activists with blinkers on their eyes failed to notice the gory murder of Girja Tikku. But Salman Khurshid, in his book Beyond Terrorism, had the grace not to conceal the barbarous murder of the lady by her killers who have revived the history of tyrant. Right, see. Girja Tikku of Bandipur worked as a laboratory assistant at the girls' high school in Trahgan, Kupwara. She was abducted in June 1990, gang raped for several days, and then shred into pieces on a bar and sawmill. The terrorists, operating under multiple forms of incarnations, sharing visceral hatred against Kashmiri Pandits, subjected them to intimidation, panic, rape, murder, sexual assault, with a view to exterminating them from the soil of Kashmir. The horrendous torture deaths brought about by a resort to barbaric methods will cause a shiver down the spine of the worst Hitlerite. Hanging, burning alive, strangulation by steel wires, draining of blood, drowning alive, beating to death, dragging to death, breaking of body parts,
dismemberment of body, slicing, fleecing, gouging of eyes, eyeballs, branding with red-hot iron bars, impaling, slaughter, were some of the methods which were adopted to exterminate Kashmiri Pandits. In absence of government computations about the killings of Hindus and Sikhs, private agencies and non-governmental organizations have put the number of Hindus of all shades who have been killed at 2,500, out of which Kashmiri Pandits stand out with a figure of 1,800 and odd. The report submitted to the National Rights Commission by Kashmiri Pandits has put the figures of killed Pandits at 319 just till October 1990. By its own admission, Government of Jammu and Kashmir in its gazette, while announcing the enactment of the Jammu and Kashmir Migrant Immovable Property Preservation, Protection and Restraint on Distress Sales Act 1997, in an annexure admitted killings of 719 Kashmiri Hindus till 1997, and many massacres and killings happened post 1997 too. To qualify as genocide, the actions must be done with intent to eliminate an entire group of people. Without provable intent, a group or individual can still be guilty of crimes against humanity or ethnic cleansing, but not genocide. In case of Kashmiri Hindus, first three conditions, though fulfillment of only one is required for establishing genocide, is established without a or any reasonable doubt. Secondly, acceptance of Government of India. By admitting the tragedy, perpetual in nature and character, ethnic cleansing akin to genocide, it can only be interpreted as ethnic cleansing amounting to genocide, like inculpable homicide amounting to murder. And then admitting it as genocide while placing a ban on JKLF, but the intentionally ignoring the tenets of established law of genocide, thereby denying the genocide, amounts to double genocide. Now issue arises, is there a denial of genocide? Talking about crime of genocide in strict legal sense, it is appalling that the past governments have persistently and purposely refrained from invoking the legal tenets of crime of genocide as per UN Convention. Even the demands of the community for basic amenities were met with stiff resistance by the state, which became a cause of death of thousands of displaced persons between 1990 and 1993. It is imperative to understand that on one side the displaced community was facing the wrath of gun-wielding terrorists supported logistically and morally by large population in Kashmir, and on other side the apathy of Union of India. The administrative expenditure incurred by the government, mainly for payment of or disbursement of cash ex gratia relief, ranged from Rs 726 to 1247 per family during the period 95-96 to 2000. During the period 450 per month per head to the maximum of Rs 1800 per family per month, cash relief was given to displaced Kashmiri Hindus. This comes to about Rs 12 per head per day. Around the same time, the government was spending around Rs 50 per head per day on each surrendered or arrested terrorist. The standard for relief to Afghan refugees in India was considerably much higher. The first response of the Government of India to the displacement of Kashmiri Hindus was to deny the tragedy. The registration process for displaced persons was started by the voluntary non-governmental organizations of Jammu and Kashmir, Sahitya Samiti. Even the initial shelters and relief measures were started by this organization rather than by the government. When the government moved formally to register the displaced persons in March 1990 and provide them with relief and shelter, its policy projections did not go beyond a few months. This was amazing when the government had enough evidence with regard to international linkages of the terrorism in the state, its sway and reach amongst the Muslims, and the widespread entrenchment of communal forces in the social milieu of Kashmir. The very location of the migrant camps reflects what the government was contemplating. Most of the camps were created adjacent to watersheds and nalas. Major camps at Purkhu, Muthi, Mishriwala, Nagrota are basically on the banks or floor beds of these nalas. That these nalas and watersheds are flooded with water during monsoon rains reflect the abject apathy of the government
or the perception that the government did not visualize that these camps may be required beyond the months of July 1990, when the monsoon would set in, and imagine the plight of the hapless inhabitants who had to survive in these temporary arrangements meant for 3 months for 22 years. In his book Kashmir, Trial and Prevail, Parallel Code writes, on gutting of some houses belonging to majority community at Handwara, the then Home Minister of India, Mufti Muhammad Sayyid, visited the town immediately. When informed by the locals that the houses were allegedly torched by security forces, the Home Minister reportedly told them to burn the Hindu houses in retaliation. From that day onwards, the torching of Hindu houses started throughout the valley. The governor K.V. Krishna Rao, as an appointee of President of India, cynically is said to have disowned Kashmiri Pandits by telling a delegation that had called on him for an interface on the formulated demands of the refugee community that they were not his concern, nor were they on his agenda. Disturbed by the massive protest of Kashmiri Pandits against the carnage at Sangrampura on 25th March 1997, Farooq Abdullah, giving full and unbridled plan to his trait of ranting and railing, bluffing and blustering, thundered on the floor of the Legislative Assembly, Kashmir will always be a Muslim state and the status wouldn't be allowed to dilute, directly rubbishing the plight and agony of genocide affected community. What to talk about its acknowledgement? During these times, the abandoned houses of Kashmiri Pandits were destroyed schematically. Initially by removing the wood used for the construction, then by removing the tin sheets which used to cover the roofs. This was done during autumn so that during the following winter, the entire construction crumbles under the weight of snow. In few areas, even the prints were excavated so that even the remnants would never be found again. The temples met the same fate. The graffitis on the walls scream of the hatred and contempt towards the Hindus. Dr. Ajay Thrangu, who visited Valley to chronicle the state and conditions of the temples, the photographs are self-revealing and speak volumes about the radicalized mindset. The destruction process unleashed on Hindus of Kashmir is a very classical example of how genocide unfolds. Only a mentally retarded or a highly biased perpetrator would not recognize it so. Kashmiri Hindu was pushed out after, for decades, he was socially profiled as the undesirable other, as an agent who is an obstruction to the cause of Islam. And when they were pushed out, the campaign was kill one and scare 10. A small community which was dispersed within the population, overwhelmingly large population of Muslims in Kashmir Valley. Kill one and scare 10 was a classical strategy, which ultimately resulted that people started leaving, fleeing their places, fleeing their habitat. And the best and the most classical expression of how genocide unfolded was the process of destruction of Hindu habitat in Kashmir. And there is a very clear-cut pattern to it. Wherever Hindu houses were in clusters, the whole locality was burnt. Wherever they were dispersed within the Muslim population, the Hindu houses were either captured or they were plundered. There was a classical and systematic process of destroying the Hindu temples and shrines across the valley. So the whole process unfolded in a way that you could realize clearly that the hatred was not only against a selected few who were killed. The hatred was directed against the entire society, against an entire civilization, against an entire religion. I have seen Hindu temples across the valley chosen to be plundered, and I have seen the type of destructive process which was reflected the mindset of those who did it. It was not just a few who did it. It was an entire societal connivance in this whole destructive process. This destruction of the Hindu habitat was evident. I found temples where the idols were broken, where the sanctum sanctorum were destroyed, defiled, where the walls were full of hateful written graffitis, warnings. Even how would those people who destroyed them think about Kashmiri Hindus, Kashmiri Pandits? It was there. Many places I found that parts of idols were kept there to communicate a message that your idol, your icon, your god has been killed. Your God was important, which always has been a jihadi argument over the years, over the centuries.
I have found in certain temples which were burnt. I have found near the dome, top dome, which is almost 3-story high, I could see that people had gone up on a ladder to erase the murals on the inside of the dome of the temple. I have seen people gone up with a bucket of shit to smear the idols or the top of the dome so that it is defiled. And I was amazed to find that this type of a hatred, that you are not even leaving the murals and you are expressing your hatred towards besmirching the entire interior of temple with shit, with such slogans which are hateful. I know it very well that there were temples which were converted into latrines. And the elite of that village or locality in the morning who had pakka latrines in their houses, they would not go for their natural call in their own homes. They will move in the form of a group to the temples which they had chosen to defile and shit there. Places like Lukbhavan and many other places where such practice was conducted not for a day, not for a month, but for the years altogether. You can see in the destruction of Hindu habitat the entire genocidal game of destroying the Hindu presence right from its roots in the way the Hindu shrines were destroyed or defiled. As I said, only a mentally blind person cannot see this reality. A full-blown classical genocidal operation was on in Kashmir, which was ignored by the state of India, which was ignored by the civil society of India, which was ignored by the law, by the courts of India, and that process is still continuing. Rubbing salt over the wounds of this minority community, National Human Rights Commission, when approached with undeniable and unflinching evidence, branded genocide as mere ethnic cleansing, saying ethnic cleansing akin to genocide. If the methodology as laid down in the principles of interpretation of law applied, term akin to cannot be interpreted other than amounting to, as in culpable homicide amounting to murder is a murder. Similarly, ethnic cleansing akin to genocide is a genocide. Just to deny genocide, such technicalities through use of different nomenclature is being purposefully used. While banning Jammu and Kashmir Liberation Front, led by Yasin Malik, unlawful under the provisions of Section 3, Clause 1 of the Unlawful Activities Prevention Act 1967, the Indian Home Secretary said, the organization which has been declared unlawful today, that is the Jammu and Kashmir Liberation Front, led by Muhammad Yasin Malik, has spearheaded the separatist ideology in the valley, and it has been at the forefront of separatist activities and violence since 1988. Murders of Kashmiri Pandits by JKLF in 1989 had triggered their exodus from the valley. And Muhammad Yasin Malik was the mastermind behind the purging of Kashmiri Pandits from the Kashmir Valley and was responsible for their genocide. Now recently government has summarized the cases involving members of JKLF. 37 FIRs have been registered by J&K police against JKLF. These include the case of murder of IAF personnel. In addition, there are 2 cases which are being investigated by CBI. But no conviction till date. Reveals a fact beyond any reasonable doubt, the complacency and connivance of the establishment. Some may term it as failure on part of establishment as well, but when the occurrences have a pattern, it is deliberate. The community was delighted that at last, after 30 long years, the state has ultimately recognized genocide. Yasin Malik, currently in jail, is being tried on 2 unlawful activities: kidnapping of Rubiya Sayyed, daughter of then Indian Home Minister Mufti Mohammad Said, and killing of Indian Air Force personnel. No case on the grounds of genocide. Denial of genocide amounts to double genocide. It is perhaps for the first time when the government of India recognized and termed the exodus of Kashmiri Hindus as genocide in a press briefing.
which the previous dispensations always knew and accepted but were hesitant to accept it in public. Imagine the plight of a nationalistic and patriotic community who sacrificed everything which was dear to them but had to face the wrath of fundamentalist regimes of Pakistan on one hand, communalized segments of majority in Kashmir on the other hand, and the state of India remained a bystander. What one fails to understand is the rationale of previous dispensations by denying genocide, which facilitated a vicious situation as the political class in India started incentivizing these secessionist forces. To the extent the subversive movement was even termed by some as people's movement for freedom, ignoring the fact that this so-called freedom movement unleashed itself by destroying the freedom of Hindus and everything related to Hindus. Let us not forget, denial of genocide plays a role of catalyst in spreading the genocide by replicating it elsewhere. Recent developments and decisions taken by the government of India has certainly generated a hope among the displaced community that the genocide perpetrators will be punished and process of reversal of genocide will be initiated soon, in accordance to the covenants of United Nations Convention. With it, the government of India will correct the international perception as well about the perils of radicalization and fundamentalism. आपने अभी प्रेजेंटेशन में दोनों चीजें देखी कि जेनोसाइड कैसे है और डिनायल ऑफ जेनोसाइड कैसे। जैसे मैंने पहले बोला कि ये 2018 की हमने ये इलस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की थी। उस टाइम एक उम्मीद थी कि जो करंट डिस्पेंसेशन है प्रोबेबली दे वुड एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द कोवेनेंट्स ऑफ द कन्वेंशन, बट अब 2 साल बाद आज हमें ये समझ आ गया है, हाँ एक चीज हुई इस पीरियड इस प्रेजेंटेशन के बनने में और आज में 370 को हटाया गया, 35A को 370 को न्यूट्रलाइज किया गया, 35A को हटाया गया। उस टाइम भी एक आशा जागी थी कि शायद अब इस पे कोई काम होगा, बट 370 35A के हटने के बाद दूसरा आ गया जी डोमिसाइल लॉ, जो 35A का ही एक आप समझे कि एक दूसरा रूप है। और आज की डेट में हमें अभी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, बिकॉज द करंट डिस्पेंसेशन इज बिहेविंग एग्जैक्टली जैसे पुरानी डिस्पेंसेशन चल रही थी। आज की इस हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं श्री शैलेंद्र ऐमा जी से। वाइस चेयरमैन हैं पनन कश्मीर के, एजुकेशनिस्ट हैं, थिंकर हैं, थॉटफुल राइटर है, जो शायद एडोलसेंस से ही एसोसिएटेड है एक्टिविज्म के साथ और स्ट्रगल ऑफ पनन कश्मीर के साथ। तो मैं ये एक रेयर एक एक्टिविस्ट हैं जो लाइफ को एज अ ट्रू शवाइट गुजारते हैं, और इनका न सिर्फ इसी में इंटरेस्ट है, इनका म्यूजिक आर्ट में भी काफी इंटरेस्ट रहा है। तो आपका स्वागत है शैलेंद्र जी हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार टीटू जी, मेरी आवाज ऑडिबल है? ऑडिबल सर, बिल्कुल क्लियरली आ रही है। फाइन सर। सर हम एंड जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था, ये जो अभी आपने ये दिखाया है, दिस नीड्स टू फर्दर पेनिट्रेट इनटू द इंडियन माइंड, और इसका एक हिंदी में एक जो आप कह रहे हैं उसको भी शीघ्रातिशीघ्र आप करें, ये बहुत यूजफुल रहेगा हमारी इस पूरी मुहिम को आगे ले जाने में। ये मैं कहना चाहता था एट द आउटसेट। सर हम आज इवनिंग में ही हम इसको कर रहे हैं, आज इवनिंग में ही वो लिंक भी करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन में हमने उस लिंक का उसमें हिंदी वर्जन का दे दिया है हमारे इसमें ही, तो हिंदी में जो देखना चाहेंगे तो। सर आपने पिक्चर दिया, आपको तो खैर पता ही है, इट इज यू, आपने फोटोग्राफी करी है, आप भी उसमें साथ थे, आप फोटोग्राफ हमने आप ही से लिए हैं, ये जो हमने मंदिरों वगैरह की ये देखी। तो आपको एज एन एक्टिविस्ट, एक मूवमेंट के एक्टिविस्ट हैं, 30 साल या 32 साल रादर, क्या चैलेंजेस रहे हैं आपको एज एन एक्टिविस्ट? और जब आप ये देखते हैं आज 30-32 साल बाद भी सिचुएशन शायद स्टेट की चेंज नहीं होती है, हाउ डू यू एनालाइज इट? Tito ji, let me be very frank. I rather feel emboldened.
I have no point. हिंदी हमारे काफी सारे जो व्यूअर्स हैं हिंदी समझ बेटर मैं तो हाँ, हिंदी हमारी राष्ट्र अपनी भाषा है, मैं प्रयास पूरा करूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है एक शब्द के लिए आपको रुक जाना पड़ता है, तो वहां पे सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। मैं प्रोत्साहित महसूस करता हूं। मैं 32 ईयर्स हो गए अब। आई डोंट फील टायर्ड और आई डोंट फील इन एनी वे नेगेटिव। आई रादर फील एंथुजियास्टिक। मैं प्रोत्साहित फील करता हूं क्योंकि दो चीजें हुई हैं। उनमें एक सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो ये हुई है कि हम इस पूरे घटनाक्रम की जो मेमोरी है उसको प्रॉपरली संजो सके हैं। वी हैव बीन एबल टू कैप्चर इट, डिलिनिएट इट and transfer it and transmute it to the next generations. ऐसा सब जगह नहीं हुआ है। I don't know how many really know कि पंजाब में जिन दिनों हालात खराब थे 84 के बाद कितने लोग वहां से एक्सोडस करने पे मजबूर हुए हैं। क्या कोई कैंप, कोई गिनती, कोई स्टैटिस्टिक्स, उसकी कोई मेमोरी है कहीं? कहीं नहीं है। वो पूरा का पूरा जिनोसाइड एक जो हुआ, जो खालिस्तानी टेररिस्ट ने फोर्स किया ऑन द इंडियंस इन पंजाब, जो ट्रू पैट्रियट्स थे पंजाब में, सिख कम्युनिटी के भी थे, हिंदू कम्युनिटी के भी थे, सबको ही थे, उसको कहीं किसी मेमोरी में आपने संजो के नहीं रखा है। उस पर कोई आपने साहित्य नहीं रचा है। तो सबसे बड़ा कारण, जो पहला कारण मेरा ये है टू फील एम्बोल्डन, उत्साहित, वो ये है कि हमने इस मेमोरी को जीवित रखा है, जीवंत रखा है और पोस्टेरिटी के लिए ट्रांसम्यूट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। तो हमारी स्ट्रगल खत्म नहीं होगी। पहला कारण ये चलेगी, निरंतर चलेगी और सक्सेसफुल होगी। दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरी बात जो मुझे उत्साहित करती है वह ये है कि 90 में जब हम ये सब फेस कर रहे थे, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम टीटू जी। कोई सोशल मीडिया ही नहीं था, कोई इंटरेक्शन नहीं थी। स्टेट जो थी वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, which forced us finally to come to this understanding that in India जो स्टेट फोर्स है, जिसको राज्य शक्ति हम कहते हैं, वो राज्य शक्ति तो भारतीय सिविलाइजेशन जो है, भारतीय जो नेशन है, वो उसको कहीं पे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, वो कहीं उसको पोषित नहीं कर रही है, उसको पल्लवित नहीं कर रही है। वो तो भारतीय सिविलाइजेशन, भारतीय नेशन जो एंटिटी है, उसको समाप्त करने के लिए काम कर रही है। आज उस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। We have been able, स्टेट की जो एपैथी है, जो स्टेट का जो एपरेटस है, जिसको बड़ी बार हमने एक वर्ड बड़ी बार यूज किया है और हम पढ़ते आए हैं, डीप स्टेट बोलते हैं उसको जी। और हम ये कंक्लूड कर चुके थे कि इंडिया में जो डीप स्टेट है वो इंडियन इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर रही है, वो देश हित के लिए काम नहीं कर रही है, वो इसके विपरीत काम कर रही है। और ये हमने होते देखा। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स कि मैं आपको एक एक चीज गिनाऊं, लेकिन आप खुद गिन सकते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ है। आज उसके बारे में लोग खुल के बात करते हैं। लोग उन इंस्टीट्यूशंस पे अब यकीन नहीं करते हैं जिन इंस्टीट्यूशंस पे हमें यकीन था और जिन यकीनों को लेके हम स्टेट के साथ सोच रहे थे कि इंडियन स्टेट हमारे रेस्क्यू के लिए खड़ी हो जाएगी। वो नहीं हुआ था। आज इंडियन स्टेट के पास धीरे धीरे शने शने वो चॉइस लिमिट हो जाएगी कि वो इंडियन स्टेट जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ खड़ी रहे। वो चॉइस इंडियन स्टेट के पास बहुत कम होती जाएगी, क्योंकि आज देश में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रांग इसलिए हुए हैं क्योंकि लोगों के पास एक बहुत बड़ी पावर है, और वो पावर सोशल मीडिया की।
आप धोखा नहीं कर सकते इस देश की जनता के साथ, इस देश के लोगों के साथ उस तरह से ब्लेटेंटली जैसे आप पहले कर रहे हो। हम तीसरी चीज जो मुझे उत्साहित करती है वो ये है, 1990 में जब मार्गदर्शन रेजोल्यूशन 91 में हमने पारित किया, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है कि किस तरह से उसे फॉर्मेशन में ही क्या, उसको एम्ब्रियो में ही, उस एम्ब्रियो को ही खत्म करने की कोशिश की गई। वो शायद 28 तारीख 27 तारीख की रात जो थी, उसके बारे में मैं तो बहुत बार मैंने कहा आई नीड टू राइट ए बुक, फुल फ्लेज बुक ऑन दैट नाइट ऑफ 27 एंड 28 दिसंबर 1991, व्हाट हैपेंड ऑन दैट नाइट। बट ये एक तो महादेव की कृपा थी, और दूसरा हमें, हमारे समाज को, भारत को, भारत की संस्कृति को जीवित रहना था, इसलिए वो संभव हुआ उस दिन रात को जो हुआ है। इट्स ए ह्यूज स्टोरी, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। उसके बाद शने शने धीरे धीरे हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे वो हमें यही बता रहे थे कि हमें बहुत ज्यादा काम करना है और शायद हमारे लाइफ टाइम में ये संभव नहीं हो पाएगा। उस समय at that point in time, almost plus 30 years from now, before now, हमें नहीं लगता था कि जो हम कह रहे हैं या जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे लाइफ टाइम में क्या ये संभव होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज मैं ईश्वर को साक्षात मान के, मैं आप सबको, अपने छोटे अजीजों को, भाइयों को, अपनी कम्युनिटी के नेताओं को, उन सबको सम्मुख रख के आज मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि पनून कश्मीर होमलैंड की क्रिएशन हमारे लाइफ टाइम में संभव होगी। इट इज एन एवलांच नाउ। इंडिया हैज टू सर्वाइव, इंडिया हैज ए ब्राइट फ्यूचर। इसको ये छोटी छोटी ताकतें, फिसिपिरस ताकतें और ये जिहादी ताकतें इस भारत को अब रोक नहीं पाएंगी। दे विल बी अपरूटेड इन अवर लाइफ टाइम। और उस सब के लिए हमें और जोर से और शिद्दत से, बहुत मजबूती से काम करना है। और ये काम जो है ये आज बहुत तेजी से चल रहे हैं। पूर्ण भारत में जो एक सांस्कृतिक, एक जो सनातन संस्कृति है, उसके जो मूल्य हैं, उसका जो ट्रूथ है, जिसको आज पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश पुंज को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आई फील मोर एबोल्डन। जब आपने बात करी पनून कश्मीर की, तो पनून कश्मीर कितना एक इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया, ये जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड कितना एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो आपने बात करी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए या जो ये जेनोसाइडल असॉल्ट है उसको रोकने के लिए। दिस इज द ओनली मीडियम, दिस इज द ओनली वेपन दैट यू हैव, बिकॉज दिस फोकसेस ऑन द लैंड फ्रॉम वेयर आफ्टर द पार्टीशन they tried to create another Pakistan, and we have to defeat this here in this land. What is Pakistan? Pakistan is basically an ideology which doesn't believe in pluralism, which only believes कि हम हैं तो हम हैं, बाकी कोई नहीं है। ये आइडियोलॉजी पूरे, ये खाली हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए डेंजरस नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए डेंजरस है। This kind of an ideology, this kind of a thinking, this has to be defeated, and its defeat will start from Kashmir, I can tell you, and that will happen once we have our foothold there. We will change the narrative of Kashmir, we'll change the policies of Kashmir, we'll change the face of Kashmir for all times to come, and that would be the beginning of a new India, a new world order, a world order which believes in pluralism, democracy, real freedom. सनातन संस्कृति फ्रीडम को लेके है, वो किसी पे थोपे जाने वाले
कोई आइडियाज नहीं है जो रिवील हुए हैं कहीं से। हम तो क्वेश्चनिंग में बिलीव करते हैं। हम प्रत्येक चीज को परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमारे तो शैव सिद्धांत हैं जो आपको मुक्त करते हैं। और ये मुक्ति जो है ये विश्व को चाहिए। आज प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति चाहिए। आप मुक्त भाव से काम कर सको, आप फ्री होके जो करना चाहो वो कर सको। ये करना चाहो डजंट मीन कि वो किसी को किल करना चाहते हैं। नो, creativity. So Sanatan Sanskriti is the epitome, is the center, the fountainhead of creativity, and the world requires that creativity today. Therefore, I say that this will start from Kashmir, and this has already started from Kashmir. 1991 was the beginning of this revolution. I tell you. I don't know. मैं कोई बड़ा hyperbole होके अगर बोल गया हूँ, so you will excuse me for that. Please, But this is exactly what I feel today. ये तो बात रही आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क की। पनन कश्मीर चूंकि एक मूवमेंट है ही है, तो साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी अगर आपको समराइज करनी हो ये 32 साल की जर्नी, तो आप इसको कैसे समराइज करोगे? Tito, let me tell you one thing very frankly. I don't know, मेरे अपने मित्र जो हैं या पनन कश्मीर के मेरे जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स इन द सेंस जो आज पोजीशन में मेरे से सीनियर हैं, वो इसको कैसे लेंगे। बट आई हैव नेवर फेल्ट कि पनन कश्मीर would work as an organization or is an organization. Organization is a very different concept, Tito ji. We are a revolution. We are not an organization. And we are revolutionaries. We are not, organization has limitations. Exactly. If we put ourselves into the framework of an organization, we will be putting ourselves to so many limitations. So let's not call ourselves as an organization. We are a revolution which is, Tito क्या बताऊं यार, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं in the past. हम जाना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा मुक्त और स्वच्छंद और स्वतंत्र प्रस्फुटन है पनन कश्मीर। किसका? उन सब कंडीशनैलिटीज का जो एक समाज पे इंपोज की गई इन द लास्ट 700 years. We have seen a period of hardly 100 and some years of the Dogra rule and the Sikh rule, जिसमें हमें शायद ब्रीदिंग स्पेस मिला। We could breathe freely. उसके अलावा 500 years of जो yoke of intense hegemony and intense depression on you, वो जब प्रस्फुटित हुआ है ना एक स्वतंत्र भाव से, तो वो पनन कश्मीर है। ये मार्गदर्शन रेजोल्यूशन जो है, मुझे आप एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू डू समथिंग इन कश्मीर। Have they been able to do anything beyond the scope of Margadarshan resolution till now? No. Let's discuss it. You being, a luminary, a legal luminary, I am asking you a question. Does the government of India have any other framework than the framework of Margadarshan resolution? Except for accepting the truth, they are following in letter and spirit the Margadarshan resolution. So, why is it so? Because this was thought through not by me or you or by 5 more persons. No. I am telling you, it's an expression of those 500 years of subjugation. It's the ultimate, lead to freedom. Not just my freedom and your freedom, to the freedom of entire India, I am telling you. Let's not trivialize it into any other thing. It's an expression of that शाश्वत सत्य और स्वतंत्रता। ये उसका एक्सप्रेशन है। हमने 8 पेज लिखे,
लेकिन उन 8 पेज को अगर आप पढ़ोगे, स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस and you will be able to expand into 800 pages. I am telling you, Tito ji. Yes. जो बेस्ट माइंड्स उस टाइम अवेलेबल थे ना इस कम्युनिटी को, अक्रॉस द ग्लोब, आई एम टेलिंग यू, नॉट लिमिटेड जस्ट टू जम्मू, उन बेस्ट माइंड्स की क्रिएशन है ये पनून कश्मीर का होमलैंड रेजोल्यूशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट, इंडियन नेशन को भी काफी मार्ग प्रशस्त कर रहा है कश्मीर के ऊपर। लेकिन उसको लेटर एंड स्पिरिट में आगे फर्दर ले जाने की जरूरत है टीटू जी। और उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अब है वो है जीनोसाइड प्रिवेंशन बिल को लेके, जो नया बिल हमने इंट्रोड्यूस आपके द्वारा, यू इन पर्सन हेडिंग दैट कमिटी, वो जो बिल लाया है हमने, उस बिल को पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडियन पार्लियामेंट को समझ के, हाँ अगर उसमें कुछ फर्दर लीगल कुछ और कुछ करना है तो वो देयर इज टोटल फ्रीडम, बट उसको लाना और उस पर एक्ट करना बहुत जरूरी, क्योंकि जिन्होंने भी ये जीनोसाइड किया ये आज नहीं किया है। मैंने आपसे कहा 700 साल की मेरी हिस्ट्री है, अगर आप दिल्ली की हिस्ट्री देखें, पंजाब की हिस्ट्री देखें, तो वो तो लगभग 1000 साल की हिस्ट्री है। 1100 समथिंग 90 में जब मोहम्मद गौरी, when he captured Punjab and then they created a sultanate here, ये जीनोसाइड तो तब से चल रहा है। अरे विजयनगरा एम्पायर का क्या हाल किया गया, हम्पी चले आप देखें, सब हिंदुस्तानियों को वहां जाना चाहिए हम्पी में। पूरा कश्मीर जहां पे सैकड़ों मंदिरों के अवशेष आपको मिलते हैं, मार्तन टेम्पल भी। मैं एक और किस्सा सुनाऊंगा, छोटा सा, अगर टाइम हुआ आज का अलग बात है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ये जीनोसाइड कोई आज से शुरू नहीं हुआ है, ये वैसा ही जीनोसाइड है जैसा ईरान में हुआ, जिसकी कोई मेमोरी सिवाय जो पारसी कम्युनिटी है उसके किसी के पास कोई मेमोरी नहीं है उस जीनोसाइड की दुनिया में। ये वैसा ही जीनोसाइड है जो सेंट्रल एशिया में हुआ। 32 इयर्स में इन्होंने पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया वहां, खोतान और वो सब जो एरियाज, 32 इयर्स में। Iran, they didn't take more than 50 years. Egypt, such genocides have happened. और हमारे यहां 1000 साल हो गए और ये जीनोसाइड परपेचुएट कर रहा है। 47 में क्या हुआ? The entire process of Ghazwa Hind had to be fructified and therefore demand for Pakistan was made. हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान। What was that? And they are working for it. ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, they are working for it. There is no full stop to this genocide. What happened in Bangladesh? What happened in Pakistan? What happened in Afghanistan? What happened in Kashmir? And what's happening in so many other places? If you don't prevent such genocides and you don't legislate for the prevention of such genocides, these will perpetrate. Therefore, we have no alternative but to bring in this act and law. तो हमारा पनून कश्मीर की 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस यही अगर खाली हम रखें, बाकी देश भर में, विश्व भर में पिछले 30 साल में जिस किस्म की नेटवर्किंग हमने की, जैसे लोगों के साथ हमने रिलेशनशिप्स बिल्ड किए, जैसे हमने जागृत किया। शैलेंद्र जी, आपका वीडियो बंद हो गया है। अरे लेट मी चेक, आ गया? आ गया। सॉरी, ओके। तो let's focus now on these 2 things. They are the redeeming features for the entire humanity, I must say, not just for Kashmiri Hindu.
not just only for India. It will be a redeeming feature for the entire humanity. That's how I look at it. जब आप देखते हैं, जब हम अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, जब आप सुनते हैं रेस्टोरेटिव जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स को, जब आप सुनते हैं रिकॉन्सिलिएशन के कॉन्सेप्ट्स को, जब आप सुनते हैं स्टेट की तरफ से बात की जाती है कि जैसे आए थे वैसे वापस जाएंगे, जब आप सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज में 6000 नौकरियां दे दी तो स्वप्न पूरे हो गए, संकल्प संपूर्ण हो गया, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? मेरे दो रिएक्शन होते हैं टीटू जी. आई हैव टू रिएक्शंस. एक रिएक्शन मेरा होता है ऑफ टोटल अम्यूजमेंट, एक्सक्यूज मी दिस एक्सप्रेशन, एंड द अदर जो रिएक्शन होता है वो बहुत दुख का होता है. लेकिन आप मुझे बताएं, मीडियोक्रिटी जो है वो दुनिया में कभी खत्म हुई है या होगी? उसी तरह से एनिमी थीसिस का एंटी थीसिस ये कभी खत्म हुआ है, कभी होगा? नहीं होगा. लेकिन हम ये मानते हैं कि सत्य की विजय होती है. ये जो बलून्स ट्राई किए जाते हैं ना, ये इसमें दो एलिमेंट्स हैं टीटू जी, दो एलिमेंट्स हैं जी, और एक बड़ा सिनिस्टर एलिमेंट है इसमें. वो सिनिस्टर एलिमेंट वही है जिन्होंने इंडियन डीप स्टेट को अपने कब्जे में किया हुआ है, इंस्टीट्यूशंस को कब्जे में किया है. मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, पीपल मे और मे नॉट एग्री. इंडिया में जो वर्स्ट रोल इस टाइम प्ले किया है, एक मीडिया ने किया है, जिसको आप फोर्थ स्टेट कहते हैं, और दूसरा हमारी जुडिशरी ने एक बहुत ही एंटी इंडिया रोल प्ले किया है. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग एंड कन्विक्शन. मैं अगर आपके साथ कभी मौका मिले, यू बीइंग ए लॉ नोइंग पर्सन, वी विल सिट एंड आई विल टॉक अबाउट. इनमें एंट्रेंच्ड होते हैं वो एलिमेंट्स, वो इंटरेस्ट, और तीसरा जो हमें नुकसान किया वो कुछ फैमिलीज एंड सम पीपल इन द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट. वेरी डेडली नेक्सस है ये. और ब्यूरोक्रेसी ऑफ कोर्स, दे कंट्रोल द नेशन थ्रू ब्यूरोक्रेसी, थ्रू जुडिशरी एंड थ्रू पॉलिटिशियंस. इसलिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं में होती है. मैं आपको सॉरी, can I digress a little from this? You can. Homeland? Okay. Now let's look at a time when 1971 war happened. 1971 war, we comprehensively defeated Pakistan and Bangladesh was created. It was a defeat of the Anglo-US lobby, which had been working in this part of the world, and Pakistan being their frontline state in this area. Usme Russia had really helped us. This was a very glorious moment. But what happened in next 10 years? Mrs. Gandhi got consumed. Pakistan became too strong, and it started talking in terms of giving us 1,000 injuries every day. This is how deep state, operates. This is how they take control of things. Same Pakistan is now pricking us for the last no more than 30 years. And we are unable to really do what we should have done to it. क्या हमारी फौज हल्की पड़ गई पहले से? क्या हमारा आर्मामेंट्स और हमारी सप्लाई ऑफ आर्म्स जो थे वो कम हो गए थे? ऐसा नहीं है. लेकिन डिसीजन मेकिंग लेवल पे आप ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं. ये होता है डीप स्टेट. आप एक विजन ही नहीं बनने देते हो
इंडिया में पैराडाइम है क्या हमारा, स्ट्रेटेजिक पैराडाइम कोई? डू वी हैव अ स्ट्रेटेजिक पैराडाइम? व्हाई वी डोंट हैव टिल डेट? Why Pakistan continued to be, the most favored state for such a long time? This is how the deep state enters you. Which deep state? Which is not for normal procedure में deep state वो institutions होते हैं, वो systems होते हैं जो आपके national interest को watch करते हैं over and above so many other things. हमारे यहाँ उल्टा है, टीटू जी, आप समझ रहे हो ये बात? तो जो आप ये कह रहे हैं, या आप कह रहे हो ना, ये लोग वही लोग हैं। अब देखिए आरएसएस, आपने बात की रिस्टोरेटिव जस्टिस की, मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में बात करता हूं। हम 1990-91 के बाद तय था कि आरएसएस इसमें कोई काम नहीं करेगी, कश्मीरी हिंदुओं को वो एक्सप्लॉइट कर लेगी फॉर सम काइंड ऑफ XYZ बेनिफिट्स फॉर देयर पार्टी और व्हाटएवर इट इज, और फॉर बिल्डिंग देयर ओन एसेट्स हियर। सहायता समिति ने जो धनराशि यहां एकत्रित की थी, उनमें आरएसएस ने अपने एसेट्स खड़े किए। इट्स ए फैक्ट, आई कैन गिव यू, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, क्योंकि सहायता समिति भी हम ही मैनेज कर रहे थे उसमें। आप मैनेज कर रहे थे? यस, हम ही मैनेज कर रहे थे, मैं अकेला नहीं मैनेज कर रहा था, लेकिन हम ही मैनेज कर रहे। माई फैमिली वॉज टोटली इन्वॉल्व। I don't want to talk about the greatness of my great dad. This is not the forum. Let's keep that. But I have given you a hint कि जब मैंने कहा हम चला रहे थे, कम मतलब समझे क्या था, तो ये अलग बात है। तो उसके बाद आरएसएस का ओवरऑल अप्रोच क्या था? कंप्रोमाइज। लेटेस्ट देख लीजिए, दत्तात्रेय होस्ट बोले यहां आते हैं और हमें क्या कहते हैं कि आपको क्या ढूंढना है, अपने अंदर श्री भट्ट और उनके अंदर बड़े शाह, जैनुल आबदीन, दैट इज द आइकॉनोग्राफी, दैट इज द आइकॉनोग्राफी। हमें ये नहीं कहा जाता कि श्री भट्ट की तो ठीक है, लेकिन कृपाराम की भी एक आइकॉनोग्राफी है। लेट कृपाराम बी अवर आइकॉन। नो, डिड एनीबडी इन आरएसएस एवर टेल यू दैट कृपाराम शुड बी योर आइकॉन? Kriparam Datta I am talking about, of Mutton, who went to the Sikh Gurus, who trained Guru Gobind Singh Ji Maharaj. ये आइकॉनोग्राफी क्यों नहीं हमें आरएसएस ने कभी बोली फॉलो करने के लिए? क्योंकि आज भी उनका कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज फॉर्मूला। तो ये जो बात करते हैं ना आप रेस्टोरेटिव जस्टिस की, ये कौन है बंदा? मैं नाम लेता हूं, विनय सहस्त्रबुद्धे वाज देयर ओवरसीज कोऑर्डिनेटर एट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, और वहां उसने जीकेपीडी खड़ा किया, एक ऑर्गेनाइजेशन इन अमेरिका, एंड उनकी तरफ से अब ये सब प्रपोजल्स आ रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं? मैंने आपको बोल दिया ये कौन लोग हैं। ये कंप्रोमाइज फॉर्मूलाज ढूंढने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान को उस सत्य और उस स्वतंत्रता के साथ कभी भी साक्षात्कार नहीं होने देंगे। वो भारत को हमेशा इन ग्लचीज के अंदर दबाए रखेंगे, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मुक्ति का भाव ही नहीं है, पढ़ाई कुछ नहीं है, कुछ महसूस नहीं किया, तपस्या ही नहीं की है। वो तपस्वी लोग नहीं हैं। आपको एक तपस्या से गुजरना है। और ये जो पनन कश्मीर की टीम है ना, 30, 40, 50, 100, 150 जितने लोग आपको दिखते हैं, ये सब तपस्वी लोग हैं। मेरा इनके साथ उठना बैठना चलना फिरना सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सब मुक्त लोग हैं। इनको कोई लालच लोभ वो सब नहीं है। और यही लीडरशिप होती है, यही लीडरशिप होती है टीटू जी। आई एम सॉरी, मैं भावुक हो गया। आई एम सॉरी। बात जब रेस्टोरेटिव की चली, मैं भी थोड़ा ऐड कर लूं, थोड़ा आप रिलैक्स करें। जब बात श्री भट्ट की होती है तो ये भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि उसने जजिया खत्म नहीं करवाया था, जजिया कम करवाया था। मैंने टीटू आपको कहा हमें इस आइकॉन के
उसमें नहीं पढ़ना है। हमारा आइकॉन कृपाराम दत्त और बीरबल धर होने चाहिए। वी शुड लुक फॉर बीरबल धर्स एंड कृपाराम दत्त अमंग अवरसेल्व्स, नॉट श्री भट्ट। और ये तो 6 बार, अगर 7वां एग्जॉडस ये है, 6 बार तो रेस्टोरेटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है, 6 बार आप धोखा खा चुके हैं, और 6 बार एग्जॉडस मेजर साइलेंट एग्जॉडस कितने नंबर ऑफ जेनोसाइड्स हो तो आप छोड़ ही दे, फिर भी इनमें ये ऑडेसिटी कैसे आती है। अब टीटू जी, अब अगर हम अपने इन लोगों को कोलैबोरेटर बोलना चाहते हैं तो लेट्स से ओपनली एंड फ्रैंकली दे आर कोलैबोरेटर्स देयर। बट जो समझ आपने बात करी डीप स्टेट की, मैं आपका समय लूंगा, दर्शकों का भी समय लूंगा, इसको मैं विस्तार से समझाना चाहता हूं स्टेट क्या है। बहुत सारे कंफ्यूजन है, उससे आपको क्लैरिटी होगी। देन आई वांट अ कमेंट ऑन दैट। हमारा जो भी यूनियन के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, दे आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53। आर्टिकल 52 says there shall be a president of India. आर्टिकल 53 कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स vested in of union shall be vested in president, which he shall exercise directly or through his subordinate officers. ये उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास है। उसके बाद आर्टिकल 74(2) कहता है कि ये वो सब काम करेगा इन अकॉर्डेंस टू द एड एंड एडवाइस एक्सटेंडेड टू हिम बाय कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। 74 आर्टिकल 2, इसका मतलब रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द ट्रेजरी बेंचेस। और उसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव के मैंने डिफाइन किया, उसके अलावा 2 और ऑर्गन्स है जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, तीसरी को जुडिशरी। अब ये जो एग्जीक्यूटिव मैंने डिफाइन करा, इनके पास ये जो ट्रेजरी बेंचेस के पास है, दिस इज द रियल एग्जीक्यूटिव। यहां से डेलीगेट एंड सब डेलीगेट होता है ब्यूरोक्रेसी में पावर्स, मेकिंग दिस द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ए एग्जीक्यूटिव। यही एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में भी इंस्ट्रूमेंटल है, बिकॉज विदाउट देयर कंसेंट जज बन नहीं सकता है। यही एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मेकिंग में भी है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का इनहेरेंट पावर्स है टू एग्जीक्यूट द लॉज, बट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर दे कैन एडजुडिकेट, दे कैन लेजिस्लेट आल्सो। और जो डीसीज वगैरह हैं, ये आपके सेटलमेंट ऑफिसर्स अदरवाइज रूल मेकिंग इनके पास होती है। सो ये जो एग्जीक्यूटिव है, कैबिनेट एंड ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द रियल स्टेट। प्रॉब्लम लाइज देयर। अब जब ब्यूरोक्रेट्स की बात, अब जब आप ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, मैं एक ऐड करूं, मैं सिर्फ ऐड करूं, ब्यूरोक्रेसी की जो बात आप कर रहे हैं, देयर इज आर्टिकल 310, उसको कहते हैं ये प्लेजर पे, एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल तब तक उस पोजीशन पे रहेगा टिल इट इज, जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है। प्रेसिडेंट का, जैसे मैंने पहले कहा, इन्हीं लोगों की अल्टीमेटली 74(2) इनको एम्पावर करता है किसकी पोस्टिंग कहां तक होगी। सो इनके पास उनके भी ये ना कठपुतलियां है वो इनके हाथों में। प्रॉब्लम इज देयर सर, इफ वी चेंज दैट मेजर थिंग्स कैन बी चेंज। there is something more to it जी, which we need to understand and appreciate. हम एक्टिव जुडिशियलिज्म की बात करते हैं ना, जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। और बड़ी बार ऐसा लगता है कि देयर इज नो एग्जीक्यूटिव, देयर इज नो लेजिस्लेचर, देयर इज ओनली जुडिशरी व्हिच इज टेकिंग डिसीजन। ऐसा लास्ट 3-4 साल में हुआ, बहुत बार हुआ। एम आई राइट सर? छोड़िए इस बात। आर्टिकल 35A was introduced to the Constitution of India. टीटू जी, मैंने 10 कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग एडिशंस ली और उनमें आर्टिकल 35A को ढूंढने की कोशिश की। कैन यू बिलीव इट? मुझे नहीं मिला। इट्स नॉट देयर। तो ये अपेंडिक्स ये में क्या हो रहा है? आप बताइए क्या हो रहा है? हु इज डूइंग इट? डिस्पाइट द फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एवरीथिंग इज वेल कोडिफाइड, पावर्स क्या होंगी, कैसे होंगी, हाउ दीज डिसीजंस आर बीइंग टेकन, एंड देन यू हैव this is what is deeper than the deep state. Try to understand sir. और देखिए, मैंने आपको मिसेस गांधी का वो एग्जांपल दे रहा था ना, मैं उस पर डीप नहीं जाना चाहता था क्योंकि ये हमारे टॉपिक से हट रहा था। बट आप ये देखिए, ये एसेंस है ना हमारा टॉपिक, हमारी जो सोल्यूशन जो है वो इन्हीं बातों में फंसा हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली because of the power that now social media and people like you and me and commoners, हम क्या हैं? हम कहीं किसी पोजीशन में हैं?
कहीं नहीं है. But we are exercising the power of our thoughts and ideas. And ये जो power of thoughts and ideas होती है ना, ये किसी भी और legislative, judicial और executive power से कहीं ज्यादा strong होती है. Exactly. अब अभी तक जो प्रोसेस था इंडिया में वो ये था कि थॉट को ही आप सबवर्ट करते हो. ये जितने भी लेफ्ट ओरिएंटेड आपकी स्कॉलरशिप रही है और ये जो हिस्ट्री राइटिंग का एक प्रोसेस रहा है, इसने किया क्या? इसने थॉट को सबवर्ट किया है. अब थॉट को सबवर्ट करने की ताकत इनके पास नहीं रही है. जयपुर डायलॉग्स है या टीटू गंजू जी हैं या पनून कश्मीर है या ऐसी आज 1, 2, 3, 4, 5 संस्थाएं नहीं है, 3, 4, 5, 10 लोग नहीं है. हिंदुस्तान में आज हजारों लोग खड़े हो चुके हैं जो इन बातों को चैलेंज कर रहे हैं, जो थॉट की सबवर्शन को चैलेंज कर रहे हैं, जो इस पे लिख रहे हैं. हाउ विल दिस गवर्नमेंट सस्टेन इटसेल्फ in such churning of ideas? It will have to bow to the larger consciousness of the Indian mind, जो reflect होती है into what you, me and all of us are doing. Do I make some sense? I don't know. Exactly. Would you agree? Exactly. I agree completely. वही मैं कह रहा था, क्योंकि this executive is the most powerful organ and इसकी जो डोरी है वो हमारे हाथ में है through vote, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं. नैरेटिव बिल्डिंग इज वन ऑफ द थिंग्स. एक क्वेश्चन आया है राजीव रैना जी की तरफ से. वो कहते हैं, कैन यू elaborate on the steps that will lead to formation of Pan Kashmir? Oh, come on. Yes. It's a very good question, very relevant question. And in fact, I have been talking about it with my friends, colleagues, and leadership of Pan Kashmir also. Some work, something you also know, because last time I discussed a few things with you also. Let's articulate it. See, formation of Pan Kashmir is not just a piece of land being handed over to us. We have to start thinking now beyond it. So the first step is that our genocide is recognized and steps are initiated for reparations, you call it. I say reversal. Same. Reversal carries everything. It carries punishment or reparation both, right? Indemnity also. You have to indemnify the community. You have to punish the perpetrators. And that is what reversal exactly means. The government has to agree to further giving a push to the Margadarshan resolution and separating Jammu and dividing Kashmir Valley into two parts. That's a very logical outcome. And that will happen. It may take 4 or 5 more years. In my understanding, it will not take more than that. ये गवर्नमेंट जितना मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी रोक ले, स्टेट नहीं रोक पाएगी इस एवलांच को. इसके बस में है नहीं. इसको 370 को, जो आपने कहा 370 को पीटर आउट किया गया और 35A को समाप्त किया गया, उसके अगला नेक्स्ट जो कॉरोलरी है वो है द रिटर्न ऑफ हिंदूज. And return of Hindus is not possible. See, demography is a challenge in Kashmir. Let's be very clear, explicit on this. इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं. अगर डेमोग्राफी नहीं है इस देश के साथ, अगर डेमोग्राफी पाकिस्तानियों और पाकिस्तान परस्तों की है, तो वो डेमोग्राफी आपको ज्यादा देर चलने नहीं देगी. तो आपको डेमोग्राफी को देखना है और डेमोग्राफी को वहां पे एक ही तरीका है, वो फुटहोल्ड क्रिएट किए बिना आप नहीं कर पाओ. ये माई का लाल इनका कोई और कुछ कर नहीं सकेगा. एंड दे कैनॉट सफर कि 2 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे. अगर वो हुआ तो ये कितनी यार, पॉलिटिक्स में आप ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाते हो. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में चेंज एक निश्चित होता है. 2 साल गवर्नमेंट रहेगी, 3 साल रहेगी, उसके बाद चेंज होगा. और अगर आप इन 2 सालों में आगे नहीं बढ़े तो आपके कदम पीछे जो हटे, उसके बाद जो होगा वो एवलांच फिर आप पर नहीं रुकेगा, वो फिर हम सब पे रुकेगा. और वो हिंदुस्तान अब अफोर्ड ही नहीं करता है. नो इंडियन विल अफोर्ड इट. सी, सो दिस इज गोइंग टू हैपन.
उसके बाद हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास एंटरप्रेन्योर की कमी है। टीटू, एक स्टेट को बनाने के लिए, एक राज्य को बनाने के लिए, एक शहर को भी बनाने के लिए एक एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत होती है। हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिकॉज ऑफ दिस 35 ईयर्स ऑफ ये जो त्रासदी थी, उसमें हम उस तरीके से, तो हमारा अब नेक्स्ट फोकस होना चाहिए अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को इकट्ठा, ताकि ताकि पॉलिटिक्स के ऊपर जो बाकी प्लानिंग के हिस्से हैं उन पे फोकस किया जा सके। तो अवर नेक्स्ट, और तीसरी बात है जो मैंने आपको अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन की बात की है, उनमें हमसे ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस है उनकी। दे आर बेटर इक्विप्ड देन व्हाट वी वर 32 ईयर्स अगो। सो हमारी नेक्स्ट जो टारगेट रहना चाहिए वो ये है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम आगे लाएं, उनमें एक एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करें, वो खाली नौकरी के चक्कर से हटें, निकलें उससे बाहर, और उस दैट विल एंड लेट एवरी इंडियन थिंक इन टर्म्स ऑफ सेटलिंग डाउन। इट शुड बी ओपन। कम से कम जो सारस्वत ब्राह्मण समाज है हिंदुस्तान का, जिसकी एक लीनेज है कश्मीर से, जिसकी एक हिस्ट्री है कश्मीर से, जिसकी अपरूटमेंट की एक हिस्ट्री है कश्मीर में, और जो बिखरा हुआ है पूरे कोंकण में और गोवा में और महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में और कर्नाटका में, उस हमारे साथ जो हम 7 लाख, या आप तो थोड़े बढ़ जाने चाहिए लेकिन आई डोंट नो, 7 लाख जो हम हैं, उनके साथ अगर ये 10-12 लाख ये भी जोड़ दिए जाए तो हम 20 लाख लोग हो जाते हैं, जिनको गारंटी करना आपने राइट टू रीसेटल डाउन इन कश्मीर। So these should be the areas of our concern for next 5, 6, 7 years. I don't know, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया, but this is how I feel and how I look at it. So our focus should be developing our entrepreneurship, giving more, empowerment to our children and our progeny, and उनको दीक्षित करें। जिस संस्कार से हम आगे आए हैं वही संस्कार उनमें पल्लवित करें। मैंने कई जगह देखा है, आई मिस वंजने, ये चुशूर बिचोर, आई मिस क्या हो, ये एटीट्यूड हैज टू बी गिवन अप। वी हैव टू मेक देम फील वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हम ये जो उनको बच्चा समझ के कह देते हैं ना, हाय आई मिस क्या हो, ये अमिस क्या हो जो है यीशु त्रावुल अश्चु यमनी, यार दे आर आवर फ्यूचर। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, हमारी यंग जनरेशन प्लस our networking with all others who want to come and settle down in Kashmir. और पनून कश्मीर में वो सब हम सेटल होंगे, इकट्ठे होंगे। आप देखिए हिंदुस्तान का नक्शा ही नहीं, पूरी दुनिया का नक्शा बदलेगा। ये दिस इज माय, एंड आई एम नॉट टॉकिंग आउट ऑफ द हैट, दिस इज व्हाट आई फील एवरी टाइम, दिस इज व्हेन आई मेडिटेट। टीटू, एक छोटी सी बात मुझे सुनाता हूं, उसके बाद खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया। आज आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं दिन को घर आके सोया। मैं सोता ही नहीं हूँ नॉर्मली दिन में, बचपन में सोता था। अब आई हैड ए विजन। यू नो व्हाट विजन? आई सॉ ऑल ऑफ अस टुगेदर एट मार्तन सन टेम्पल इन कश्मीर, द रूइंस। इट स्नोड, it's all over snow, and from the north and eastern part, वो जो पहलगाम के ऊपर वाला एरिया है, वहां पे बहुत ब्राइट एक माउंटेन है, और शेषनाग मुझे उसमें दिखाई दे रहा है, शेषनाग देव लेक। वहां पे बहुत व्हाइटनेस है, बहुत ब्रिलियंस है। एंड सिचुक में वना तो अजय जी तो अग्निशेखर जी है ओरा कसो ओरा तारो। मैंने कहा क्या मारा कर है पन्नू कश्मीर आशुते थी। No, this was just before I woke up. मैंने भूपिंदर से बात की, मैंने भूपिंदर को कहा मैं यार बड़ा लेट हो गया उठने में, मैं सो गया था आज। So this vision is telling us something. It's directing us. ये हमें प्रेरणा भी दे रहा है और हमें
रास्ता भी दिखा रहा है। यानी अगर कोई क्वेश्चन किसी ने और पूछना है तो प्लीज, मैं छोटा सा जान हूं, क्या जवाब दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। एनी अदर क्वेश्चन रुद्रा जी? नो सर। चलें जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। I don't know how well did it go with all of you, but I have spoken out of my heart and my understanding. That is why there is no question. You have addressed every question. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो हमने निकाला इसका, if we summarize this talk, तो इनका मानना, शैलेंद्र रायमा जी का मानना है कि जो मार्गदर्शन implementation, complete implementation of Margdarshan resolution should be adopted by State of India through the instrumentality of Kashmir Genocide and Atrocities Prevention Bill 2020, और बहुत जल्दी 4-5 साल में इन्होंने आज प्रोफेसी भी कर ली। I hope it comes true, creation of Pan Kashmir within 4 or 5 years from today. Thank you so much सभी का। God bless you all. God bless you all. भगवान आप सबको बहुत हिम्मत दे, शक्ति दे, और हम और आगे बढ़े। थैंक यू, बाय। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी चैनल पे। कल हम बात करने वाले हैं डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड बाय द स्टेट। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर उमेंद्रू रत्नू जी, ये ENT सर्जन है एंड हिंदू राइट्स एक्टिविस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।